Alright guys, today we will be um, discussing this test on atomic structures. Right, so first question is the radius of the third Bohr orbit is. अच्छा तब को पता है कि radius कैसे find करते हैं ना? We do 0.529 times n square, right? So यहाँ पे n जो है वो 3 है, third orbit का पूछा है ना, तो we'll do 3 square. ठीक है? The ground state of an atom corresponds to सिर्फ ground state में atom के पास minimum energy होती है, ठीक है? फिर जब वो electron excite होता है तो energy बढ़ती जाती है, ठीक है? Shape of the orbital occupied by an electron is, तो size तो हमारे पास जो है वो principal से होती है, फिर shape जो है वो azimuthal quantum number से होती है, ठीक है? Okay, so the relationship between n and L is कि L is equal to n minus 1. ठीक है, so if it's s orbital तो वो 0 हो जाएगा, right? If it's p orbital तो 1 हो जाएगा, इस तरह से. Okay, 2p की quantum number values क्या होंगे? So अगर ये 2 है तो मतलब n हमारे पास 2 है, right? फिर अगर हम L ढूंढेंगे तो वो n minus 1 करेंगे, so that would be 1, right? So n equals 2, L equals 1. Okay. Which pair has one electron in its s orbital? So जो first वाले हैं सोडियम एंड क्रोमियम, इनके पास s में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, बिकॉज दे आर लाइक they're in first group, right? तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है s, जो कि उनका वैलेंस शेल होता है. Okay, which of the following best describes the emission spectrum of the hydrogen atomic hydrogen? So several discrete lines of, जिसको वो 5 जो series होती है ना, so those पे several discrete series of lines with both intensity and spacings between lines decreasing as the wave number increases. ठीक है, तो intensity decrease होती जाती है जैसे ही wave number बढ़ता जाता है. Okay, the Balmer series जो है वो visible spectrum में होती है, ठीक है, visible, I mean visible region में होती है, ठीक है. And I think Paston is infrared, probably. Paston is not infrared. Okay. Okay, so Lyman is UV, Palmer is visible, Paston is LR, Brackett is infrared. ठीक है? How many electrons can have the values n equals 2? अगर n equals 2 है तो मतलब p orbital है, L equals 1 है, right? And then s equals plus जो है हमारे पास, so मतलब this is 2p, right? 2p होगा ना, और 2p में हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है? And each one of them can have 3 electrons. I mean, each one will have 1, so a total of 3 electrons, right? So इससे यहाँ पे 3 होगा. Okay, if uncertainty in the position is 0, तो momentum में कितनी होगी? ठीक है, यानी क्या होता है, डेल्टा p x होता है ना, तो अगर x is 0 तो p जो है हमारे पास infinity होगा, ठीक है? Okay. When beta particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight as, क्योंकि like because there's like a lot of empty space, ठीक है, तो इसलिए वो कहीं भी bump नहीं करते, they go straight. The probability of finding an electron residing in a px orbital is 0. So किस में 0 होगी? Y, because p orbital है, px है, तो y और z plane में वो क्या होगा, 0 होगा, right? Because वो x plane में you'll probably find it most likely, ठीक है? In a single hydrogen atom, the electron is excited to its 6th orbital, ठीक है? The maximum number of distinct lines when it comes to the ground is 15. अच्छा, ये हम कैसे find करेंगे? इस formula से, n minus 1 upon 2, right? तो 6 minus 1 क्या होता है, 5. 5 times 6 is 30, divided by 2 is 15. ठीक है? Okay, the difference between the nth and n plus 1th pores radius is this. ठीक है, तो वो जैसे बोल रहे हैं वैसे ही अगर हम अरेंज करते हैं, ठीक है,
यानी हमें ये तो पता है ना कि ये वाला फार्मूला यूज होता है आर nth ऑर्बिटल का रेडियस मालूम करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि n+1 और n का जब हमने डिफरेंस ढूंढा है तो हमारे पास n-1 आया है, ठीक है। तो इसमें हम आर n की जगह ये पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1 किया है, यहाँ पे n सेम रखा है, यहाँ पे n-1 लिखा है, ठीक है। देन यू सॉल्व फॉर n, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी विच इज 4। Okay. Consider one hydrogen ion in excited state, which of the following holds true. अच्छा, तो क्या होगा? According to Bohr's model, the electron separation from the center of nucleus is more than 6 angstrom. ठीक है? The given diagram indicates the energy levels of certain atom. तो ये हमारे पास है ना, तो वो बोल रहे हैं कि अगर 2e से e तक आ रहा है, ठीक है, तो a photon of length wavelength जो है हमारे पास lambda is emitted। अगर वो 4e/3 से e तक आए तो फिर हमारे पास क्या वेवलेंथ होगी, ठीक है। सो इसका जो सोल्यूशन है ना, वो आप यहाँ पे देखें। पहले वो हमें बोल रहा है कि क्या होता है, डेल्टा E इक्वल्स एच वी, राइट। तो एच वी एंड देन डेल्टा E इज 2e - e, राइट। V की जगह हम c/λ लिख सकते हैं, राइट। एंड देन लैम्डा बिकम्स इक्वल टू hc/e, ठीक है। अब वो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हेन ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम 4e/3 लेवल टू e लेवल, तो फिर हम सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, ओके। hc/λ इक्वल्स e, ठीक है। अब डेल्टा ई जो है यहाँ पे क्या होगा, 4e/3 - e, ठीक है, विच इज इक्वल टू e/3। आप एलसीएम लोगे, and then we know that hc/e is equal to lambda, जो कि हमने यहाँ पे ढूंढा था। तो हमारे पास 3 lambda आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो we used first part to determine lambda की वैल्यू ना, ओके। Total number of electrons in copper for which the summation of azimuthal quantum number and magnetic quantum number is 0। अच्छा, तो अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो ये होती है, ठीक है, जिसमें L जो है हमारे पास 0 है। अगर L 0 है तो S सब शेल, और S सब शेल में बस कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे हैं, और दो यहाँ पे हैं, that's 6, और एक यहाँ पे है, so that's 7, so total of 7, ठीक है। Okay, if the Rutherford would have used beta particles instead of alpha particles in his gold leaf experiment, which of the following observations would not have been made? The beta particles scattering beyond the gold foil ये नहीं होता, ठीक है, because वो सारे deflected, because उनके पास negative charge है ना, so they would have been deflected, right? Okay, the ratio of charge to mass values for proton and alpha particles। तो देखें, इसमें आपको प्रोटॉन की चार्ज भी पता है और मास भी पता है, जैसे आप प्रोटॉन का चार्ज टू मास ढूंढ सकते हो, ठीक है। फिर अल्फा पार्टिकल की चार्ज भी आपको पता है और उसका मास भी आपको पता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू विल नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो इससे भी आप चार्ज टू मास रेशियो ढूंढ सकते हो, फिर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2:1। For sets of values of quantum number n, l, m, and s are given below, which does not provide a permissible solution। तो इसमें देखें, अगर s हमारे पास 3 है तो l हमारे पास कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, shouldn't be more than 3, more than 2, ठीक है, it can't be more than 2 ever। तो ये वाला नहीं होगा। The d orbital which is bilobed with collar is z square जो है ना, वो bilobed with collar होता है, ठीक है। Dash is or are isoelectronic with potassium, so potassium से isoelectronic ये तीनों है, ठीक है। So potassium के पास हमारे पास 2a
9 होता है, राइट, फिर वो एक लूज कर देता है, राइट, सो इट्स लाइक 2 8 8 और फिर आगे एक ऑर्बिटल में 1 होता है ना, तो वो लूज हो गया, तो उसके पास टोटल कितने हो गए, इतने, which is 16 17 18। फॉस्फोरस के पास 15 होते हैं, ठीक है, वो 3 गेन कर रहा है तो उसके पास भी 18 हो गए। सिलिकॉन के पास 14 होते हैं, 4 गेन कर रहा है तो 18 हो गए। सल्फर के पास 16 होते हैं, 2 गेन कर रहा है तो 18 हो गए। सो दे आर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक। Okay, the atomic number of an element is 26. How many electrons are present in M shell of this element in ground state? ठीक है, तो M shell में कितने होंगे? अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो you'll get this। अब M shell में सारे जो है 3 वाले होंगे ना, बिकॉज M जो है वो थर्ड आता है, सो ये 2 होंगे और ये होगा, ठीक है। सो 6 6 और 2, दैट्स व्हाट 8 14, राइट, 6 plus 6 12 and then 2 ऐड करो तो 14। Okay, the electronic configuration of an element is this। तो is this ground state or excited state? तो देखें वो Hund's rule follow कर रहे हैं ना, it's 1 1 1। तो Hund's rule जो है वो ground state में follow करता है ना, so इसलिए it's ground state। The correct electronic configuration of copper is, so remember जो है 4s1 और 3d10 होना चाहिए, है ना, तो इसमें 4s2 है और 3d9 है, ये नहीं होगा, ये 3d इधर एक मिसिंग है, इधर 2 मिसिंग है, तो ये होगा ना, because it's 4s1 and then 3d10। Which of the following ion has similar electronic configuration like argon? तो टाइटेनियम के पास सिमिलर होती है, ठीक है, titanium like in the ionic form। In electronic configuration, copper and chromium of copper and chromium, which of the following is true? So दोनों के पास 4s में एक होता है, because remember वो 4s के पास 1 होता है, फिर वो 5d सॉरी 4d जो है हमारे पास वो उनके 10 हो जाते हैं, राइट, तो इसलिए 5 और 10 हो जाते हैं। Which of the following violates Hund's rule? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन px को दे दिए हैं। It should have been 2px1 2py1, ठीक है, so this violates the Hund's rule। Which one of the following represents most stable configuration? तो most stable ये है because it's following Hund's rule और इसके तीनों orbital filled भी हैं, ठीक है, like दो तीनों में same number of electrons है ना, and it's following Hund's rule। बाकी देखो वो Hund's rule follow नहीं कर रहे, ठीक है, so they're not stable। Which one of the following electronic configuration represents an element that will form a simple ion with -3? तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो it can lose 3 gain 3 electrons, sorry, because P में 6 आते हैं, right, so it can gain 3 electrons and form -3 charge का ion। Species Z has following configuration, तो ये क्या हो सकता है? So if you count the electrons, 2 4 6 8 12 10 12 14 15 16, ठीक है, तो 16 किस में होता है, सल्फर में होता है, राइट। If the mass of electron is reduced to half, then Rydberg's constant will also become half, ठीक है। Which element is electronic configuration of a noble gas, notably krypton 5s2 4d2? तो जो zirconium है ना, I mean it's a big element, you probably wouldn't remember this, but yeah, as we move away from nucleus, the distance between adjacent orbitals goes on। तो जैसे हम दूर चलते जाते हैं ना, तो adjacent orbitals में distance जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। Energy difference between the energy levels far away from the nucleus, तो वहाँ पे energy difference जो है वो, because the shells are now coming closer, तो उनका energy difference जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक है, the energy difference is like smaller and smaller as you go away from the nucleus। The dash distinct series, so there are 5 of them, right, Balmer है, Lyman है, Paston है, Brackett है और Fund है, और Fund की value is 5, right। Orbital having shape of dumbbell with a donut is the Z square, ठीक है। Bilobed was bilobed पीछे कौन सा था, वही वाला। Okay, so now we have English। So correct option क्या होगा, the population increase, because population is plural, right, is due to, okay, not plural, okay, so population increase is one subject, the population increase is
due to the number of people who are born in any year being greater than the number who die. Right? So this is correct. The population number is due to the number of people who are born in any year being greater than the number who dies नहीं die होगा ठीक है Okay, इधर क्या होगा Silverdable train station can be reached by going left at this road junction ठीक है अब इधर क्या गलत है can be reached by going the left नहीं आएगा can be reached by going left at this road can be reached by going left at this road इसमें क्या इसमें द सिल्वर डेल दिया है ओके सो द सिल्वर डेल नहीं होगा can be reached by going to left at this road junction going left so two is redundant here right okay इधर ये सही होगा because see it is a vehicle through which to teach children how to behave and how to feel about themselves and others अब इसमें देखें तो it is a vehicle through which to teach children how to behave and how to feel about himself nahi themselves right because हम children बहुत सारे children की बात कर रहे हैं it is a vehicle through which to teach children how to behave and how to feel about yourselves nahi themselves होगा themself nahi themselves होगा okay a clergyman who united the entire congregation was liberal minded ठीक है so it's about the commas ठीक है यहाँ पे commas दोनों तरफ proper जगह पे दिए हुए हैं बाकी में नहीं है okay okay Mani suffered one final ignominy after death when his tomb was desecrated ठीक है okay so so the statement is the country does not have enough funds to utilize such water resources. Now, is that true? हम ये पढ़ के देखते हैं. The water resources of a country are very much underutilized, right? So say yeah, वो बोल रहे हैं underutilized है. The main reason is that the lack of capital and technology, right? So यानी जो पैसे हैं या फिर जो resources हैं वो नहीं है. That's what capital means. ठीक है, so it's sort of true, right? It's definitely true. क्योंकि वो यही बोल रहे हैं. Okay, इसमें इस सीरीज में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 6 is 2 times 3 and then 18 is 6 times 3 54 is 18 times 3 and 162 is 54 times 3 तो आगे वाला ढूंढने के लिए you'll do 162 times 3 which is 486 right okay and then here we have 4 times 2 minus 1 okay so that's like 8 minus 1 which is 7 and then 7 times 2 plus 1 and then 15 times 2 minus 1 and then 29 times 2 plus 1 तो मैं right so इस तरह से करेंगे तो आगे आप क्या करोगे 117 times 2 plus 1 तो आपको मिलेगा 235 okay so the family has a man एक आदमी है उसकी वाइफ है उसके 4 sons हैं और उनकी बीवियां हैं right and their wives the family if every son has 3 sons and 1 daughter find out the total number of male members in the whole family. तो एक तो the man himself और उसके 4 बेटे will be 5 people and then हर एक बेटे के पास 3 sons हैं यानी 12 sons उनके total हो गए तो फिर 12 plus 5 क्या होता है 17 होता है ठीक है okay special tax package has been announced for the new industries by the state government the state government has hiked different taxes for all अब देखें ये because ये हुआ पहले right they hiked different taxes for all industrial activities in last year इसकी वजह से जो है special tax package announce हुआ ना right so statement 2 is the cause and 1 is the effect okay so if you guys have any questions please let me know in the comments let me open comments and then if you have any questions we can address them